second session of seventh day. We have with us Professor Arvind Kumar Mishra Sahab from Jawaharlal Nehru University, Delhi. सभी लोग आ गए? To start with only few minutes, there was a question from your side how to deal with the different stages of the research. Actually, a statistician या expert is not required at the time of analyzing of the data. There are 5 stages. Planning, you need to plan so many things. You need to look into your expertise, your interest, the target population, the time frame, the funds. So many things needs to be decided before moving towards the research title and so many things. And after planning, then you need to go for designing, research study design. It's the protocol, or you can say the blueprint of your research. सारी चीज़ें उसमें फ्रेम हो जाएंगी. Target population, sample size, sampling technique, and what are the tools that you are going to consider. So many things. And the third stage is gathering. Again, the statistics is required at the time of collection of the data also. So many things. How you are going to deal with non-response rate. How you are to deal with the person who is not motivated. जैसे इधर से सवाल आया था. एक ऐसे experience आपको fields में होंगे, then you will really be the wonderful package in days to come. So planning, designing, gathering and analyzing. So this exercise is how to deal with the data, how to analyze the data. You can make yourself the perfect data analyst also. You need not to go and bother to the statistician to analyze the data. You can. अब तो बहुत आसान है सारी चीज़ें. And the last stage is reporting. तो हर stage reporting के लिए number of rules and ethics are there. Again सारी चीज़ें आपको control करनी हैं और manage करनी हैं. आपका क्वेश्चन ये था. सो पांचों स्टेज को आपको सीरियसली लेना है. सेकंड क्वेश्चन था इधर से सैम्पलिंग के बारे में. So very interesting question. He asked about the quota sampling. Quota sampling is a non-probability sampling. The sample size is fixed. मुझे तो 50 टीचर्स को ही स्टडी करना है. You are not bothered about their nature, their position. Got it? Fix. There are certain types of study जिनको इस तरह से आपको करना होता है स्टडी. इसी के पैरेलल if you look into the stratified random sampling, तो ये दो तरह की होती है, proportionate and non-proportionate. For example, if I am interested to study the teachers of the university, then I will go proportionate. अगर 200 उसमें assistant professor हैं और 100 आपके मान लीजिए associate हैं और 60 आपके प्रोफेसर हैं, तो उस प्रोपोर्शन में हर स्ट्रेटम से आपको पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना है और कंप्लीट आपका सैंपल बनेगा. तो ये जो आएगा ये प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. और जब रैंडमनेस की बात करते हैं या रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो यू कैन जनरलाइज योर फाइंडिंग्स. ख्याल रहे इसी की तरफ जाते हैं. एक क्वेश्चन इधर से था, परहैप्स शिवाज वर्षा, आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. When you are dealing with the non-experimental research studies or qualitative research, so this is a very different challenge before the researcher, how to deal with the respondent. क्वालिटेटिव रिसर्च की ब्यूटी ये है कि यू कैन अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव और एम्स ऑन ए लिमिटेड सैम्पल साइज. यानी एक सब्जेक्ट को ही आप स्टडी करके आप पीएचडी अवार्ड आपकी हो सकती है. तो एक सब्जेक्ट को स्टडी करने का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन ऑल द इश्यूज ऑफ द सब्जेक्ट. इथनोग्राफी की जो बात आई कि आप उसका कल्चर का पार्ट बन रहे हैं. मैंने देखा है कि बनारस में जो घाट पे क्रिमिनेशन के लिए बॉडीज जाती हैं, वहाँ पे सोचिए, आई एम सॉरी टू शेयर विद यू कि जो हम पहली बार जाते हैं शायद हम वहाँ खड़े नहीं हो पाते हैं. हर 2 मिनट पे एक बॉडी आ रही है, चारों तरफ चल रहा है. लेकिन जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं, जिनकी दुनिया बहुत डिफरेंट है,
thousands of dollar वो खर्च करके they are staying there months और they used to study their paradigm कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं. वंडरफुल कंट्रीब्यूशन होता है, वंडरफुल रिसर्च होता है. एक रिसर्च मैंने कराई थी स्टॉकर्स के ऊपर. अब सोचिए कितना चैलेंजिंग होगा. इसमें एफआईआर भी एक दाखिल हुई, हाउ टू डील विद स्टॉकर्स. स्टॉकिंग की तो गर्ल्स ज़्यादातर सफ़र करती हैं. तो वहाँ पहला ही क्वेश्चन था, डिड यू एवर ट्राई टू स्टॉक समवन एल्स. अब देखिए कितना इरिटेटिंग क्वेश्चन था. कौन हाँ कहेगा, कौन हाँ कहेगा. लेकिन हाँ कहने वाले भी होते हैं. इट इज़ यू टू मैनेज द सीन. नहीं तो रिसर्चर की यही ब्यूटी होती है कि आप अपने रिसर्च टाइटल में, रिसर्च प्रॉब्लम में कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं. मुश्किल नहीं है. मेरा बहुत लिमिटेड टास्क है ये 10 दिन का. कैन यू इमेजिन कि 3 महीने से मैं किस कदर इन्वॉल्व हूँ इसमें. कल सर आगरा से एक प्रोफेसर आए थे, डायरेक्टर हैं एक इंस्टीट्यूट के. बोले खां साहब ने 3 महीने पहले कहा कि साहब डेट दीजिए. हाउ इट कैन बी पॉसिबल यार, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ. मैंने कहा नहीं देनी पड़ेगी. अब सी इट. तो रिजल्ट्स आते हैं. ट्रस्ट मी, इफ़ यू इन्वॉल्व योर सेल्फ कंप्लीटली, बहुत वंडरफुल रिजल्ट आते हैं. आई थिंक जमशेद का एक क्वेश्चन था. देखिए रिसर्च का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स द पॉपुलेशन इज नॉट अवेलेबल टू यू टू स्टडी. पॉपुलेशन कभी आपके पास अवेलेबल नहीं होती है. हमेशा यू आर गोइंग टू स्टडी ए सैंपल एंड जनरलाइज योर फाइंडिंग्स टुवर्ड्स पॉपुलेशन. अगर सैंपल आपका साइंटिफिकली सिलेक्टेड है तब और सारी प्रोसेस, सारी मेथोडोलॉजी साइंटिफिकली ड्रॉन है, तो ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू जनरलाइज योर फाइंडिंग्स टुवर्ड्स पॉपुलेशन. तो ऐसा सीन कभी नहीं होगा कि पॉपुलेशन आपके लिए स्टडी करने के लिए होगी. चाहे ड्रग्स की ले लें, चाहे दूसरी हॉबीज़ की ले लें. थैंक यू सो मच. थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता है लेकिन आई थॉट इट कि आपसे इस तरह की बातें मैं कर लूँ. अभी के अभी ये डाइजेस्ट चीज़ें हो जाएं और ख़त्म हो जाएं. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी हैव वंडरफुल सेशंस. प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा साहब थे. द डे 1 ही लुक्ड आफ्टर 2 सेशंस, पैराडाइम्स ऑफ सोशल रिसर्च एंड सोशल साइंसेज. सर के टीचर रहे हैं. देख सर के टीचर सुपरवाइजर. देखिए कितना बड़ा गिरीश्वर मिश्रा साहब. और उनके बड़े भाई 2 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे. और यू कैन इमेजिन कि सर बताएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब कितनी इज्जत करते थे. वो परिवार है और उसी परिवार से सर आ रहे हैं. तो वी आर ग्रेटफुल सर. और वंडरफुल टॉक थी सर. देन द सेम डे प्रोफेसर निज़ामुद्दीन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी ही डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू सिलेक्ट द रिसर्च आइडिया एंड स्टेप्स टू कंडक्ट द रिसर्च. Second day, Professor Akbar Hussain from Department of Psychology, he discussed about development and standardization of tests. Wonderful discussion. And same day, the third session, it was from Professor Aqil Ahmed, the head of the Department of Statistics and OR. He discussed about hypothesis testing and choosing appropriate parametric and non-parametric tests. Third day, sir, we were having Professor Rajiv Pandey, head of the Department of Lucknow University from Department of Statistics. He discussed about SPSS overview and how to manage or import data from different databases and how to compute descriptive and inferential statistics. Also discussed about hypothesis testing. Then same day, third session was taken care of by Professor Parvez Talib from Department of Business Administration, and he discussed about contemporary practices in social science research. Fourth day, the first 2 sessions were taken care of by Professor Rishipal from Vishwakarma Skill University, Gurgaon. He discussed about methods of non-linear regression and problems faced during research and their remedies. Next session of the same day was taken care of by Professor Mohammad Shamim. He discussed about sampling and estimation of sample size.
आई नो द लिमिटेशन, मुझे फीडबैक मिली है, सो जो आपके क्वेश्चन थे अनएड्रेस, आई ट्राई टू रेस्पॉन्ड देम. And the day 5, we were having Professor Akram Sahab from sociology. He discussed about measuring social realities using quantitative research methods. And the same day we were having Professor M. Ghazi Shahnawaz Sahab from Jamia Islamia. He discussed about interdependence techniques, EFA, CFA, moderation and mediation. सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ साथ पढ़े हैं और एक साथ पढ़ाया भी है. जी जी. Then next day, day 6, sir, we were blessed by Professor Yusuf Ansari from Department of Petroleum Studies. He discussed a very interesting topic, elevating academic writing with analog precision. He discussed so many tips and utilities of the MS Word only. हम सालों से use करते हैं, लेकिन as a researcher, wonderful discussion. And the same day we were having Professor Naveen Gupta, the professor and director of Hindustan Institute of Management and Computer Studies, Mathura. He discussed about the qualitative research design, the application of appreciative inquiry and action research. Wonderful discussion, sir. Khel mein how to develop the team, how to manage the time, so many things were discussed by him. And today morning, Professor Asmar Beg Sahab discussed about the non-experimental research design, especially special reference to the survey methods in research. Friends, we have Professor Arvind Kumar Sahab from JNU, and he is going to discuss about social science research and philosophical reflection. देखिए JNU वाले हैं तो इसलिए डिफरेंट तो होना ही है, ना पीपीटी है ना मशीन है, बस बातें ही बातें होंगी और वंडरफुल बातें होंगी. एंड जस्ट ब्रीफ, प्रोफेसर अरविंद कुमार साहब इज वर्किंग इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली. His academic trajectory is remarkable, starting with the University of Delhi, where he achieved a gold medal in his master's degree and obtained a doctorate in psychology from Delhi University. Professor Mishra has over 2 decades of teaching and research experience, specializing in social psychology. He has provided guidance to multiple PhD and master's students. His exceptional work has been published in renowned global journals. Dr. Mishra's contribution to his field of expertise has been of great value to the entire academic fraternity of psychology. Friends, it was brief about sir. और भी अनलिमिटेड अचीवमेंट्स हैं जिनको शायद मैं काउंट करूं तो बहुत वक्त लगेगा. बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं. वंस आई वाज डाउन बिकॉज ऑफ माय मिसफॉर्चून, ही हेल्प्ड मी. माय ग्रेटिट्यूड सर. इतने अच्छे इंसान हैं. देखिए, व्हाट आई विश टू कन्वे, प्लीज नेवर हेजिटेट टू एक्नॉलेज. बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूँ. ये बहुत मुश्किल होता है कि पब्लिकली एडमिट करना कि समवन हेल्प मी, लेकिन बहुत आसान है. दिलों में इतनी जगह और रिश्ते बनते हैं जो शायद ही टूट पाते हैं. तो बहुत शुक्रिया सर, मेरी रिक्वेस्ट पर आए. सर सुबह ही आ गए थे ट्रेन से, 7:45 बजे. आप लोग तो सो रहे थे तब तक, और तब से सर हमारे साथ हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर. नाउ ओवर टू यू सर. बहुत अच्छी तस्वीर है. Good afternoon to everybody, and I'm really very happy to be part of this program, wonderful program.
And before this session, I had fortune to interact with Professor Khan, although I know him for a long time. And every time I meet him, uh, I get inspired because of his simplicity, genuineness, and his scholarship. Uh, so getting some positive feedback from such a wonderful human being is really a privilege and gift for me. When Professor Khan invited me to be part of this program, I said, no, this is what I love in my life and nothing more. I don't require any power position, I do not want anything else. If you ask me to talk to students, researchers, yeah. So this is what that gives me pleasure, and that makes me my life very meaningful. The topic which I have chosen, although it's a very tough task for me, because first day my teacher and who is undoubtedly number one psychologist in this country, the amount of work he has done, I think we require 3 lives to complete that. Sometimes I wonder that how one person can work so much. And at this age, the number of hours he himself studies and writes, we can't match him. So he has already sent a benchmark. Many things maybe because I have learned psychology from him. I have learned how to do good quality of psychology. And where is the role of philosophy in doing good psychology? And not only doing good psychology, but in any discipline. Okay? So it is quite possible that some point may be common, but I would try to talk something. Perhaps he may not have said, although he is a very knowledgeable person, and it's very difficult that he will not cover many things. Because he reads so much, he knows so many things. Since you are all PhD students, and you all know full form of PhD, Doctor of Philosophy, why do we use this word, Doctor of Philosophy? Although you might be a student in psychology, management, journalism, commerce, political science, history, English literature, Urdu literature, many subjects. But what is common thing? Still we call it is Doctor of Philosophy. Have you ever thought of that? Why it is called Doctor of Philosophy? And earlier, now UGC has abolished that degree, Master of Philosophy. So it means you are awarded the highest degree of university, which is known as Doctor of Philosophy, for doing your research. There must be some kind of significance. Okay? We all know that in most of the department, there is a department with the name Department of Philosophy in most of the universities. So philosophy has two meanings. One meaning of philosophy is that it is a subject, it is a discipline, like any other discipline. But another meaning of philosophy is that it is highest form of knowledge. Okay? So every discipline, including mathematics, every discipline has its philosophy. Chemistry has its philosophy, biology has its philosophy, business studies has its philosophy, psychology has its philosophy, physics has its philosophy. There is a book by one of the best physicists of the world. His name is Werner Heisenberg. He is considered to be father of quantum physics. And he wrote a book, Physics and Philosophy. Okay? So every discipline, so highest form of knowledge in any discipline is philosophical. I'm sure you must be knowing the name of Professor Amartya Sen. He got Nobel Prize in Economics in 1998. He is in Harvard University. Before Harvard, he was in Delhi University. And in Harvard University, he holds 2 chairs, Department of Economics, Department of Philosophy. And when I talk to my economics colleague that why Amartya Sen is great, another economist got Nobel Prize who is of Indian origin. You must be knowing his name, Abhijit Banerjee. Okay? He was
JNU student. He did his MPhil from JNU and then moved to US to do his PhD. So quite often we discuss and we try to compare Amartya Sen and Abhijit Banerjee. Both are Nobel laureates from India, and incidentally both are from Bengal. But I asked my economics colleague, how do you rate them? And they said that Amartya Sen is far, far ahead. And why Amartya Sen is very different, very far ahead? Because his background in philosophy. So when he does economics, he does not leave economics at the level of the language. So every discipline has a specific language. And we learn that language. Language is very tricky thing. Language helps us to understand things. Language helps us to communicate about things. But there is a limitation of language. Language binds us, bounds us, it delimits us. No? So it also imposes some kind of limitation on us. So it allows us to understand certain things, and it also does not allow to understand or express it differently. A chair, take for example. If I ask you, please describe this chair. And this has been done experimentally. People from different background, from business, from botany, from economics, from literature, and they describe any object very differently depending upon their background. So every discipline has a language, as I said, and specialized knowledge, language helps you to look at things in a particular way. Because irrespective of discipline, one common thing is that we require some information, some data, no? Quantitative, qualitative, whatever may be, through experiments, through observation, through survey, through ethnography, whatever that may be. But you require some information. Okay? And for requiring information, either you yourself observe or you get that information from the participant of it. In any kind of research, you get it from participant or you get it, you observe yourself. Now, there is a philosophical question, and it is not, many people nowadays say that, no, it is philosophical, means it is not very practical, it is not relevant. I would like to draw your attention that when I say that it is philosophical, means it is very, very fundamental. Okay? Either we can understand things at a very, very surface level, which we say that we simply scratch the surface, or you can go deep into that issue. Ideally, a person should be awarded Doctor of Philosophy only when he or she takes knowledge at the level of philosophy. It is ideal. In fact, in reality, it never happens. It never happens. Why? Because research is hardly taught at the level of philosophy. At the level of philosophy. And if we do not know the significance of, and when you will complete your PhD and degree would be awarded, then university organizes a convocation, and in convocation, Vice Chancellor awards PhD degree. So, since I have attended that, and in all university, what does Vice Chancellor say? And it has come from Oxford University, and we follow that tradition. So, before awarding that degree, Vice Chancellor will say, by virtue of authority vested in me as the Vice Chancellor of this university, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy and charge you to be worthy of same in your words and action. So I admit you to the degree of Doctor of Philosophy and to be worthy of same. It's not that only you produce knowledge, you internalize knowledge. So knowledge which you are proposing, which we call thesis,
it should not remain at the level of thesis only. You should internalize so that your words and actions should reflect what you have said. So PhD was conceptualized in such a profound manner. It is unfortunate that PhD has become like any ordinary degree and anybody can do PhD without doing much work. So what I said, that all the time we are not able to achieve or do the ideal thing, but we should always strive to achieve that. And if we have not achieved, at least we should be humble. That's no, I have not been able to do. If Amar Sen has got PhD and I have also got PhD, I should not consider myself equal to Amar Sen. उसको भी PhD मिला, हमको भी मिला, तो there is difference in quality of PhD. I have not been able to do, but if I am sincere enough, I am honest enough, I must know my limitation. What is the source of my limitation? Why I could not achieve the level which Professor Amar Sen achieved during his PhD. And if we are honest and if we are open, so a PhD scholar should have open eyes, open ears, and open mind. It's really important. Otherwise, research, and this you will not find in any book, but based on my experience, research has become, unfortunately, a set of ritualistic activities. So in social life, and there is nothing bad about that, in every society, in every religion, there are some rituals. And ritual has its significance. So, to lead life, social life, to lead a collective life, we require some rituals. Okay? And rituals are taught to us, the younger generation, by our parents, to maintain continuity in the society and culture. So we hardly ask question about the logic behind rituals. Neither our parents encourage us, and it is expected that we should follow what our parents say. In every society it happens. And it is important also to maintain continuity. But in research, if we become ritualistic, it is unfortunate. So I hope that I have made it clear. Ritual by themselves are not bad. In certain contexts, rituals are very important. In social context, in religious context, rituals are very important. But in academic context, especially in research context, if research becomes ritualistic, it will never be able to achieve what it is supposed to achieve. That is, it will never allow you to take knowledge at the level of philosophy. So we say that a groundbreaking research. Okay? Groundbreaking research. Now let me elaborate upon what do I mean by research as a set of ritualistic activity. So what are the rituals of research? There should be some topic. No? Then you should be doing review of literature. Why we are doing review of literature? And this I have said at many places. Whenever I find thesis, one of the most painful experience in Indian context is to examine PhD thesis. Because it is so badly written, so badly done. Quality of research in our country is very, very bad. And I will give one data, and that will make it very clear. In terms of quantity, India is number 4th country in producing number of research. Only China, US and UK are ahead of us in terms of quantity. But we all know the best university of India, which is the best university, number 1? IIC Bangalore, Indian Institute of Science Bangalore. NIRF सुना होगा आप लोगों ने? National ranking framework. So Government of India, Ministry of Education does it. So consistently, it is IIC Bangalore number 1, JNU number 2. But even number 1 university
is not in top 200 university of the world. So, could you see this paradox? In terms of quantity of research, we are fourth. In terms of ranking, we are not even in top 200. And it is a matter of concern. It is a matter of concern. So many research, even published one, I am saying, only for name's sake they are research, but they are not research. Otherwise, our country would have been, if not top 4, top 10. It is a matter of concern. I remember former President of India, Pranab Mukherjee, whenever he would meet Vice Chancellor, he would always express, Professor Grishwar Mishra, when he was Vice Chancellor, so every Vice Chancellor had to go to President of India, because President of India is the visitor of all central universities. So when President calls meeting of central university vice, they have to go. And every time he used to express this concern. Why our university's ranking is so low at the world level? And in ranking of the university, quality of research is one of the most important components. So logically, what inference we can draw? That quality of research that is produced in our country is very, very dismal. Very, very dismal. And I will say it is ritualistic research. It is a ritualistic research. So research in real sense should contribute to knowledge, new knowledge. That is the meaning of research. When we say thesis means not the PhD, look at the thesis लिख दिया. No. Thesis means you are proposing something. That is it. So examiner will ask, what is your thesis? In Hindi we say स्थापना. आपने क्या स्थापना दिया? What new you have proposed, which is not known to academic community. What is the new knowledge we have created? Have we created a new knowledge? And on this parameter, if I evaluate the PhD degree that are awarded every year, not 1% PhD will qualify as real PhD because it does not contribute to that. It remains at the level of ritual. At the level of ritual. When Professor Khan was talking about the topics, wonderful topic, and you are lucky that you are listening to those things. Why I am talking about this philosophy of research and philosophical reflection? Because of my concern and anguish that such a great country, this country had very glorious academic past. No, we used to attract scholars from abroad, ancient time. But why the situation is like that? And now what is the trend? Those who are capable, they send their children abroad. Many people in my department also, they work on migration of research scholars. So our country is losing a lot of money because the parents are spending money on the education of. So they are very clear that quality of education in this country is not good. No. Can we do anything? I think one of the purpose why ICSSR is spending money, and person like Professor Khan, even on Sunday, is with you, spending. He could have spent his time elsewhere, but because of his commitment to research, so he has organized and he is here. So let's try to understand. So in good American university, if somebody does PhD, a paper based on that research will get published in one of the top journals. I will take example from my discipline, so psychology, which is Professor Khan's discipline also. So our academic organization, the best organization we call APA, American Psychological Association. Even scholars from other disciplines must be aware of this because APA's reference style is followed in other also. APA. APA is wonderful academic organization and APA publishes journals. And those journals are very top. And it's very difficult
to publish in APA journal. Okay? If I roughly, although I have not counted, how many Indian scholars who are working in India have been able to publish in APA journal? Very few. Our discipline is now more than 100-year-old in this country. The first department of psychology was started in 1915 in Calcutta University, so 108 years. And not, I think, even 50 journal articles in APA journals are published. Whereas in American university, I think if not every scholar, but every second or third scholar will be able to publish in APA journal, and that is based on PhD work. So that is another indication that quality of research that is produced in our country is quite low. By saying all these things, I do not want to discourage or demoralize you. My purpose is just opposite to that. I want you to motivate to do a research so that you can publish your paper in a good journal. There is another danger that in India, somebody may have talked to you about a concept called predatory journal. Are you aware of predatory journal? You know, this concept comes from biology, predator. What is predator? Some kind of insect, no, that tries to kill other, no, one's food. So predatory journals are very low quality journal, and that lures scholars to publish their work in exchange of some payment. And at a young age, scholars are not mature enough, they get tempted, I will say, they fall in trap of that. So predatory journals are one of the bad things. And we have umpteen number of predatory journals in our country. So you will receive requests from these kind of journal on your email account. And many students, because of ignorance or sometimes some other kind of compulsion, they submit their paper and get published, and they start thinking that I have published a paper. And it becomes a bad example for the next generation of scholars, because for them this is what a paper is. Recently, in my university, I was part of a committee. We were screening the application that were submitted for associate professor level in my university. Because post was advertised, so candidates applied. So they have to also submit their published paper. And when we were looking at those papers, almost I was in my tears. It can be so bad. It can be so bad. Three-page article, 4-page article, and just by looking at the print quality, you can see it is a predatory. So it is not an exception in our country. In fact, it has become a norm. It has become a majority trait. Since you are a young researcher, and I am alerting you, these are the dangers. These are dangers. In fact, I may use people who are associated with those journals and trying to lure you. They are like shark. समुद्र में shark क्या करता है? आपको खा जाता है. So you will get destroyed. So be very clear. So a good research is one which gets published in a good journal. I do not want to criticize anybody, but wherever you are, in whichever, try to search on Google, and nowadays it is not difficult, that one who is supervising you, whether he or she has been able to publish a paper in a good journal, which has some impact factor.
About impact factor, again I will tell you. In the world, impact factor is no, the power to assign impact factor to a journal is with Clarivate. Okay? The organization is Clarivate. But I know many Indian journal, they claim that this journal has 8 impact factors. Whereas at international level, in social science, one impact factor is very tough. 1.53 is very tough. So if you find any Indian journal claiming that its impact factor is 5, 6, 8, you should beware of. It is a predatory journal. Predatory journal. So these are the traps I have said. But my basic agenda is positive. Positive is that how to take our research at those levels. Can Indian scholar publish their paper in APA journal or British Psychological Society journal? Similarly, American Educational Research Association journal, ERA, or similarly in other disciplines. Conversion rate of Indian PhD getting published into a good journal is not even 1%. 100 अगर PhD हो रहा है, एक भी उसमें अच्छे जर्नल में नहीं पब्लिश हो पा रहा है. That is quality of PhD in our country. So मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप PhD नहीं करें, लेकिन आप अवेयर रहें. और आपको PhD डिग्री मिल भी जाता है, तो यूनिवर्सिटी को चलने के लिए PhD देना पड़ता है लोगों को. But don't get under false impression that you have really learned research. आपको तब तक बैठना नहीं है और आराम नहीं करना है जब तक कि आपके पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं हो. बस मेरा ये कहना है. लाइफ लॉन्ग मैं तो टीचर को कहता हूँ, क्योंकि रिफ्रेशर कोर्स में जब निकले 100 पेपर नहीं छापो. पूरी जिंदगी में अगर 30 साल तुम नौकरी की, एक पेपर पब्लिश करोगे. एंड आई कैन टेल यू, इस कंट्री में जितने भी टीचर हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसमें 90% ऐसे हैं पूरी जिंदगी में एक ढंग का पेपर पब्लिश नहीं किया. दैट इज अनदर डार्क सी. सो हाउ टू टेक रिसर्च at high level so that it can be published in good. The first thing, and that topic has been covered, but I will discuss in my own way, that is a formulation of research problem. Formulation of, although I know that this topic has been covered, but different people have different way to deal with the same issue, and that's the beauty of philosophy and social science research. How do we, so can I get some observation or response from you, because you are at initial stage of research, this is what I have been told. So have you identified your research problem so far? Okay, so just tell me that what process did you follow? आपने अपना जो भी research topic है, कोई did you follow any process to identify research problem? क्या किया आपने, कैसे रिसर्च आप तो कर रहे हैं, तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम आया कहाँ से आपके पास? लिटरेचर. गुड गुड. एटलीस्ट एक रिस्पॉन्स जो ये मिला कि ज्यादातर जगह लोग कहते हैं कि पहले रिसर्च प्रॉब्लम मिल गया तब लिटरेचर रिव्यू करते हैं. एंड देयर आर बुक्स which says that literature review is the second step in research. So steps in doing research, first is identification of research problem, second is review of literature. So I am very happy with this response that you are saying, first I have done review and this is a reality. This is a reality. If your research problem is not based on review of literature, it cannot be a good problem. It cannot be a good problem. Okay? So logically, this process is correct, and I congratulate you. You have done that. But when we say literature review, based on again my experience
evaluating PhD thesis, it is one of the most dislikable part of thesis of most of the students. Yes, it is weakest. Review of literature लोगों को लगता है कि इसमें बहुत आसान है. There is no need for any training, or anybody can do. And one bad model, and when I am saying bad model, so you should not do that in your PhD. That's why I am saying that one bad model of writing review. How do they write? They write abstract of research. जो summary है. Means Mishra and Khan, 1998. And paragraph is ended. Then next, Smith and Cohen, one by one. So in name of review of literature, what is generally done? It is compilation of summary of previous research. Okay? This is not review of literature. 95% research scholars, they do this. All thesis. And it is awful. इससे भी कोई कम शब्द में बोल सकते. It is awful. This is not what you do. And it will not help you what it is supposed to do. Review of literature, for review of literature, because please mind, it is review. Okay? So you are viewing it from your own re-examine karo. Means we are not satisfied the way it was done. So researcher has done, fine, every researcher has done. When you are reporting their summary only and not adding your own comments on that, what you are doing? You are uncritically accepting the finding of previous researchers. Uncritical, okay? Whereas in review of literature, the most important thing is you should be critical, okay? So, as I told you that majority of the Indian theses falter on this side. Review is not review at all. It is not review at all. So for review, how to read? Because any journal article which you refer to, no? How to read a journal article? क्या करते हैं? एक आर्टिकल आपने लिया, क्या करते हैं उसको? कैसे पढ़ते हैं? And why do we read? Let's start. Yeah. So why do we? Because you have your own problem, or you are in the process of formulating your problem. Because response was that a researcher requires a research problem to begin with, and to have research problem, you are doing a review of literature. So our objective is to identify a problem. How do we identify problem? By doing review of literature. Very good, very good. Research gap. It is very important. Research gap. So we do review of literature in the first phase, because there will be review of literature in the second phase also. But first phase of review of literature is for the purpose of identifying research gap in your area. Okay? So a researcher starts with a broad theme like child right or child labor. Any topic from your field you can take. So when you say child right or child labor or inclusive education or discrimination of a community, these are the broad themes. It is not a topic. Okay? And a topic should not be finalized without doing comprehensive critical review of literature. Okay? And one important thing for formulating your research problem, and please keep in your mind when I say formulating your research problem, formulate, not discovering. So what is the difference between discovering a research problem and formulating a research problem?
can you tell me what is difference between them? In discover क्या करते हैं? Things already exist. It is covered, no? It is covered, so we discover, no? We remove the upper surface that is masking it, and we discover. So it is already existing. Research problem does not exist. Research problems have to be formulated, have to be developed. बहुत लोग कहते हैं ये क्या समाज में मैंने देखा ये प्रॉब्लम यस देयर आर सोशल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम automatically does not become a research problem. So if there is incidence of phenomenon like in our country child labor, and we all are concerned, it is not a good thing for any society. So when we see child labor, it does not become a research problem. So this is a social problem which you are moved by, and you want to have a deep knowledge about it, and that's why you want to do research. So it is very valid that our source of inspiration for a research problem can be some social problem or problem in my own family, with my relative, or sometimes with myself also. So these are the source of, but since I suffer from this problem of my relatives suffer from this problem, or this problem is in society, it automatically does not become a research problem. It has to be translated, it has to be articulated in terms of a research problem. So social problem or personal problem has to be translated, has to be articulated in terms of research problem. So it is a process. And for that process, we need to do review of literature. So purpose of review of literature is not ritualistic. And I will use this word ritual or ritualistic many times. Because it is one of the major cause of low quality research in our country. Because research has been reduced at the level of rituals, and it is not at the level of logic and philosophy. And that's why none of the Indian university is in top 200. Objective, hard core data, and we cannot deny it. Now, how much time it takes? How much time it takes? How much time a researcher should devote to formulate or develop a research problem? कितना लगना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने, डेवलप करने, फॉर्मुलेट करने में? कितना? 2 months. बताइए. How much time roughly? 5 to 6. In my university, students take 2 years, and university gives 2 years. In top US university, when you take admission in PhD program, you have to do coursework for 2 years, unlike 6 months in Indian university. 2-year rigorous coursework, and 30% of students are not allowed to write their thesis because they don't qualify. So we were talking about quality of research in American university. So it is not a magic. क्योंकि अमेरिका में है तो रिसर्च उनका पब्लिश होगा ही नो. They follow some process. Let's learn from that. So if in मैं ये नहीं कहूँ कि उसकी नकल कर इमिटेट करना चाहिए कि अमेरिका में हो रहा है. Because of the importance of review of literature, because review of literature is one of the most difficult thing to learn. And this aspect, it is one of the most neglected aspects in our research training. I do not know in your respective university or college
how many lectures are given on the review of literature, and how many teachers talk about review of literature. But I can tell that majority of us do not know review of literature, including myself. Now I will give you example कि केवल लेकिन positive क्या हो सकता है. In every discipline you have a journal, और अच्छे journal का नाम भी आप जानिए, annual review. So annual review of psychology, annual review of political science, annual review of anthropology, annual review of sociology, annual review of economics. Okay? और ये जर्नल पूरे साल में एक ही बार आता है. Unlike other journals which are biannual or quarterly, ये साल में एक आता है. An annual review जो होता है, और जर्नल का प्रोसेस है कि if I have done some research or written a paper, I submit my articles, and if it is approved by reviewer, it gets published. In annual review, you can't submit your article. That is not the system. It is editor who invites you to write article for. Annual review is one of the most respected, prestigious journals in the field. So now just try to guess, international level पे है, who will be invited to write article in annual review? कुछ तो guess कर सकते हैं. जैसे कि अगर क्रिकेट का अगर एक इंटरनेशनल टीम बनाया जाए, किसको किसको कंसीडर किया जाएगा? नंबर 1 ओपनर किसको रखेंगे? Because he has scored, no? So you go through the record, है ना? उसी तरह से annual review, suppose you become editor of annual review, okay, of political science, and there is a topic called state and democracy. So how will you identify the contributor? क्या करेंगे आप? अगर आप एडिटर हैं और इस टॉपिक पे आपको एक आर्टिकल लिखवाना है स्टेट एंड डेमोक्रेसी पे, तो क्या प्रोसेस है? इसका मतलब है कि आप जो टॉप जर्नल्स हैं वर्ल्ड के, वो एरे गैरे जो हमारे ठीक है टॉप, उस जर्नल में कौन पब्लिश कर रहा है इसमें, and publishing in top journal, I've already told you, my discipline is more than 100-year-old, and not even 50 articles have been published in APA journal. तो APA में जो पब्लिश होगा उसी को तो हम लोग मानेंगे ना कि ये स्कॉलर है उस लेवल का. So only established scholars who have consistently published in high quality journal, they are invited by the editor of annual review to contribute an article. उस आर्टिकल की क्वालिटी आप समझ सकते हैं. तो मिनिमम एक फील्ड में जिसने कम से कम 20 से 30 साल लगातार काम किया है और हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश किया है, उसको एडिटर इनवाइट करता है कि आप लिखो. ठीक है. अगर उसने एक आर्टिकल लिखा है, आप समझ सकते हैं इसका क्वालिटी आप समझो. और पर्पस क्या होता है रिव्यू का, तो इससे मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद और आपकी तो स्टेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ऑनलाइन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो मिल ही रहा है. तो एनुअल रिव्यू के जो आर्टिकल्स हैं आप उसको पढ़िए, अगर वो जैसे लिखता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का मॉडल होता है. So in that context I am saying how review of literature should be written in thesis. So model is articles published in annual review. और आप जितनी थीसिस आपको दिखता है अपनी यूनिवर्सिटी में उससे कंपेयर करके देख लीजिए कि किसी ने रिव्यू किया है सही से नहीं किया है. आपको सारे लोगों ने रिचुअल किया है, गलत किया है, रिव्यू तो किया ही नहीं. ठीक है. तो एक मॉडल हमने बताया कि हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ, और जैसा मैंने कहा जितने मैंने
एनुअल रिव्यू की बात कही, एक दो इंडियन स्कॉलर को जानता था जो जेएनयू में अब रिटायर भी कर गए हैं, उनका आर्टिकल पब्लिश है एनुअल रिव्यू ऑफ सोशियोलॉजी में, एक का इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी यूनिवर्सिटी है, किसी स्कॉलर को और को नहीं समझा गया कि वो एनुअल रिव्यू के लायक है। वो एनुअल रिव्यू करना इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। So I am reminding you, I am not discouraging you, that we should have clarity about ideal in our field. क्या ideal है? We all know that we shall not be able to achieve that ideal. जैसे अगर कोई बैट्समैन है, उसको ब्रेडमैन या सचिन तेंदुलकर देखना चाहिए, तभी वो इम्प्रूव हमेशा करेगा। ठीक है, you cannot become like Bradman, you cannot become like Sachin, but you cannot improve unless you have in your mind Bradman or Sachin Tendulkar. Similarly, we may not write like annual review article, but that should be our goal, and we should not be satisfied as long as there is a gap between my writing and writing in annual review. Is it clear to you? ये मैंने बताया कि जो हमारी थीसिस का है, और ये सब कारण है कि हमारा पेपर पब्लिश नहीं होता अच्छे जर्नल में। तो सबसे, बिकॉज आई ऑल्सो एम रिव्यूअर ऑफ मेनी जर्नल्स, जो आर्टिकल सबमिट होते हैं वो रिव्यूअर के पास और एनोनिमस होता है, मुझे भी नहीं पता है किसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और जिसका पेपर मैंने रिव्यू किया उसको भी नहीं पता है किसने, इसको कहते हैं डबल बाइंडिंग। इट्स वेरी गुड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। So when I review some manuscript, what do I look for? First thing I look for in a manuscript, whether the problem, the research problem that has been taken by the researcher, it is a good research problem or not. और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, इंटरनेशनल जर्नल जो पब्लिश होते हैं, out of 10 I reject 8 articles on average. और सबसे बड़ा कारण है मेरा रिजेक्ट करने का कि प्रॉब्लम मुझे लगता है तो बेकार है, प्रॉब्लम ही है। और उस बेसिस में कहता हूँ कि इंडिया में भी जितने पीएचडी होते हैं उसमें भी 80 या 90% या 95% जो है वो टॉपिक था ही नहीं। So it's good that you are attending this conference, this seminar or workshop at this stage when you are early in your research phase. Please understand and appreciate significance of research problem. ऐसा मैंने कहा, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में 2 साल रिव्यू कोर्स वर्क, जिसमें खाली रिव्यू ही करना होता है, तब उनको रिसर्च में आगे बढ़ने में एग्जाम होता है, और जो एग्जाम में पास करते हैं उन्हीं को अलाउ किया जाता है, 30% लोग फेल करते हैं। तो 2 साल का, और जेएनयू में भी, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ जेएनयू तो बहुत बड़ा है, बट ये एक यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी अलाउ भी करती है, तो 2 साल का टाइम कम से, और खासकर हमारे यहाँ का हायर एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो अमेरिका से बहुत अलग है। तो जो वहाँ के स्टूडेंट को 2 साल लग रहा है कोर्स वर्क करने, हमारे यहाँ का जिस तरह का है, स्कूल एजुकेशन अच्छा नहीं है, कॉलेज एजुकेशन अच्छा है, यहाँ तो और चाहिए, तो मिनिमम 2 साल से तो कम का रिव्यू हमारा जो है बहुत वीक होता है, और चूंकि रिव्यू जब वीक है तो आई ऑलवेज से द रिसर्च प्रॉब्लम इज लाइक फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन कमजोर है और आप खूब डेकोरेशन किया, आपने खर्च किया, क्या फायदा, बिल्डिंग खत्म हो गया। आई थिंक योर, हाँ, एक व्हाट्सएप पे मुझे बड़ा अच्छा रिव्यू अपने टीचर का मिला है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बढ़िया लिखा हुआ है, आई मस्ट शेयर विद यू।
then I can say, somehow it got erased or deleted. But it was a kind of metaphor was used that when you formulate your research problem based on sketchy review of literature, it is like a building which you have constructed on a frozen lake. कश्मीर में डल लेक है ना, बहुत बढ़िया है, लेकिन ठंड में क्या होता है वहाँ पे, वो जो जम जाता है डल लेक, उस पर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, कितना मजबूत रहेगा वो बिल्डिंग। So research problem formulated based on sketchy review of literature. और मैं आपको कह सकता हूँ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कोई भी कहे, मैं तो सबसे पहले मानता हूँ कि अगर मेरा आर्टिकल एनुअल रिव्यू ऑफ साइकोलॉजी में नहीं छपा, I should always accept that I do not know review of literature. So nobody should claim that I have learned review of literature. It is a process. मैं कह सकता हूँ कि relatively I am better. So किसी को 5% आता है, मुझे शायद 10% आता है. So it is a process. It is a process. Every time we have to learn. Every time we have to learn. Same article can be understood differently. Can be understood differently. And as I said that it is a review. So author who has written an article is fine. Author has one perspective. Can we understand what has been written by author from different perspectives? If you can do that and you can write your comment on that, you are doing review. You are doing review. केवल कॉपी पेस्ट कर लेना पुराना, जो कि 95% यहाँ पे होता है हमारी कंट्री में, उसको इसलिए मैंने वो सबसे कमजोर चैप्टर होता है थीसिस का, और उसकी वजह से जो हमारे पेपर जो है इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश नहीं होते। तो मैं आपको लिंक बता रहा हूँ कि ये कोई मिस्ट्री नहीं है कि अमेरिकन जर्नल ये यूनिवर्सिटी के पीएचडी छप जाते हैं और हमारे यहाँ का जो है एक सेज और रटलेज में भी नहीं छपता, जो कि वो भी अच्छा है। एक 1 इम्पैक्ट फैक्टर 1.3 इम्पैक्ट फैक्टर जो रियल, नॉट गुड़गांव जर्नल है, क्योंकि गुड़गांव से कुछ उस तरह के फेक जर्नल छप रहे हैं जो 8 अपना क्लेम करता है। मैं कह सकता हूँ किसी भी डिसिप्लिन में जो इंडियन जर्नल है उसका 1 से इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो अगर कोई क्लेम कर रहा है 7-8, वो प्रीडेटरी और फेक है। So do not fall in trap of that. तो उनको पता लगा कि दुकान तभी चलेगी जब इम्पैक्ट फैक्टर में बोलूंगा, तो वो बेवकूफ लोगों को तो नकल भी करने नहीं आती है ना, उनको पता है कि इम्पैक्ट फैक्टर कितना होना चाहिए। 2 इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल उसमें पब्लिश करने में हालत खराब हो जाती है, और वो 7-8 के लिए तो बेवकूफ लोगों का तो नकल के लिए अकल भी नहीं है उनके पास। तो आप ये समझ जाएंगे। सो आई एम सेइंग रिव्यू एक ऐसी चीज है, अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। रिव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट एफर्ट। वी शुड नेवर थिंक दैट वी हैव लर्नड इट। आपने जो भी लिखा उससे बेहतर और रिव्यू किया जा सकता है, सबके साथ है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने नहीं सीखा है, इसका सिंपल मतलब है कि इसको और इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करना। ठीक है, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और मैंने आपको ऑब्जेक्टिव डेटा दे दिया कि मैं तो 2 इंडियन को जानता हूँ जिनका कि एनुअल रिव्यू में पब्लिश हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंट्री, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर बोलते हैं सब लोग एनुअल रिव्यू में उनका पब्लिश हुआ है। तो उनको नहीं माना गया कि उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उनको नहीं माना गया कि वो रिव्यू करते। और एक रिव्यू आर्टिकल जो है खाली रिव्यू नहीं होता है, वो नॉलेज को कंट्रीब्यूट, रिव्यू अपने आप में एक नया नॉलेज क्रिएट करता है। रिव्यू अपने आप, जैसे कि जो गैप की आपने बात कही ना, तो अगर किसी ने कोई बात कही हुई पहले रिसर्च, बहुत बड़ा रिसर्चर है, आपने क्रिटिकल रिव्यू करके दिखा दिया कि यहाँ पे ये कमी थी, और जो उनका कंक्लूजन है वो लॉजिकली सही नहीं है। आपका
पर्पस नहीं उनको नीचा दिखाना। पर्पस क्या है देखिए कि रिसर्च में ये क्यों करते हैं आप, और व्हाई वी शुड बिकम क्रिटिकल, नॉट टू पुल समबडी डाउन, नेगेटिव पर्पस नहीं है। पर्पस है कि कांस्टेंट नॉलेज शुड बी एडवांस्ड, नॉलेज शुड बी एडवांस। तो जो आपको लगता है कि ये नॉलेज है और ये परफेक्ट है, लेकिन उसकी पॉजिटिव, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा साइंस के फिजिक्स। फिजिक्स में न्यूटन का सब नाम हम लोग जानते हैं, और न्यूटन ने जब अपनी फिजिक्स डेवलप की तो 300 साल तक पूरी दुनिया में लोग मानते थे कि अब फिजिक्स में कुछ भी नया करने का गुंजाइश नहीं बचे। Whatever was required to be discovered had been discovered by Newton. और एक बहुत बड़े बाद में साइंटिस्ट हुए, जब वो क्लास 10 पास किया, he was very talented. तो वो इस डायलेमा में थे क्या डिसिप्लिन में पढ़ूं हायर लेवल पे। उनके वेल विशर ने कहा यू कैन डिसाइड एनी सब्जेक्ट एक्सेप्ट फिजिक्स, बिकॉज इन फिजिक्स देयर इज नो स्कोप फॉर डूइंग एनीथिंग न्यू, बिकॉज एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। तो न्यूटन का ये डोमिनेंस था फिजिक्स में फॉर 300 इयर्स। अब साइंस जो है अपने मुकाम पे पहुंच चुका है, इससे आगे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्या होगा 20वीं सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुआ, आइंस्टीन आ गए और उन्होंने थियरी ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और बाद में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरा एक क्वांटम फिजिक्स हुआ। ये दो बहुत बड़ा डेवलपमेंट, रिवॉल्यूशन ला दिया। और इसके बाद जो है सबसे बड़ी न्यूटन ने जो बात कही वो तो बड़ी लिमिटेड सेंस की बात है। न्यूटोनियन फिजिक्स cannot explain all range of physical phenomena. पर्पस ये है कि न्यूटन को नीचा दिखाने का, ये कि न्यूटन जो है ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन है, he has helped us to understand a range of phenomena, but everything he cannot explain, and there are things रिव्यू का भी पर्पस जो है, नया रिसर्च करके भी पर्पस है to advance knowledge. So unless we become critical in our thinking, critical, okay? So एक रिसर्च स्कॉलर का जो ट्रेट आप लोग को डेवलप करना चाहिए, नाम सुनेंगे आइंस्टीन या आपके फील्ड के कोई बहुत बड़े हुए तो we have respect. We should give respect. But by giving respect, you should not stop your critical thinking. ठीक है? एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की ट्रेनिंग होती है, वो रिसर्च रेस्पेक्ट न्यूटन को भी देती है, आइंस्टीन को भी देती है। ऐसा नहीं कि आइंस्टीन्स वर्ड इज द फाइनल वर्ड इन फिजिक्स। जो रिसर्च वहां कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं आइंस्टीन से भी। सो वी शुड नॉट बिकम अनक्रिटिकल एडमायरर ऑफ बिग रिसर्च। आप क्रिटिकली एडमायर कीजिए उनको, उनका जो कंट्रीब्यूशन है ड्यू है, यू मस्ट अप्रिशिएट what good things you have done. So अगर आप एनुअल रिव्यू का आर्टिकल पढ़ेंगे, और मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पढ़ेंगे इस वर्कशॉप के बाद, अपने फील्ड का जो भी आपका एरिया है उससे फायदा भी बहुत होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है रिव्यू का, कि एक अच्छे रिसर्च के लिए जब तक आप अच्छा लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे आर्टिकल, और आपके फील्ड का अच्छा आर्टिकल क्या है कौन बताएगा? एनुअल रिव्यू का जो आर्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके रेफरेंस लिस्ट जो है, क्योंकि वो अपने फील्ड का टॉप रिसर्चर है, तो उसको उस फील्ड में जो सबसे अच्छे काम है उसी को वो साइट करता है। जो रेफरेंस लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन एनुअल रिव्यू इज अ ग्रेट सोर्स, इट इज अ ट्रेजर। और फिर अब उस आर्टिकल को आप खोजने की कोशिश कीजिए, वहां तो केवल उसका रेफरेंस है, आप वहीं रुक ना जाइए। एक एक आर्टिकल को कम से कम उसमें से 50% को अगर आपने डाउनलोड किया कहीं से, आपके अगर ये है कि हिंदुस्तान में ये सारे फ्रीली डाउनलोडेबल नहीं होता है, तो उसका भी तरीका है, वो चोरी को मैं चोरी नहीं मानता हूँ, कि आपके फ्रेंड अगर यूके या अमेरिका में कोई पढ़ाई
ये रेफरेंस है, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी में सारे जो है डाउनलोड है, वो अपनी लाइब्रेरी से डाउनलोड, ये मैं करता हूँ, जो यहाँ पे मैं डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, वेरी एक्सपेंसिव जर्नल, तो आई राइट टू देम, और वो अपनी लाइब्रेरी से डाउनलोड करके मुझे भेज देते हैं। तो आप अच्छे आर्टिकल को जब तक अपने फील्ड के लिए पढ़ेंगे, व्हाट आर द सेमिनल आर्टिकल्स जिसका रियल कंट्रीब्यूशन है, तब तक आपका रिसर्च, तो तब क्वालिटी, जो मैंने कहा, जब मैं रिव्यू करता हूँ मैन्युस्क्रिप्ट को, तो सबसे पहली चीज क्या देखता हूँ, क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, और 80% तो मुझे लगता है कि बेकार था, करने ही लायक नहीं था। उसके बाद अगर लगता भी है थोड़ी गुंजाइश है इस प्रॉब्लम में, रिव्यू कैसे किया उसने, रिव्यू करना, उसको लिखना, और लिखने का वही है जो हाईएस्ट फॉर्म इज एनुअल रिव्यू। और आप किसी भी अपने फील्ड का अच्छे जर्नल के आर्टिकल का अगर आप पढ़ेंगे, शुरू का 2-3 पैराग्राफ, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड इरिप्लेसेबल है। आप ट्राई करें केवल कि जो लिखा है कोई एक वर्ड, इस वर्ड और आप थिसरस निकालें और देखें कि सिनोनिम्स निकाल के इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इतना केयरफुली वो लिखते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हम एक जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए आर्टिकल में, वर्ड कैसे लिख रहे हैं, एवरी सेंटेंस इज वेरी लॉजिकल, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 3 कैन बी एक्सचेंज द सीक्वेंस, कि थर्ड को हम फर्स्ट लाते हैं और ये देखेंगे कि आप बिगड़ने लगेगा, और सेकंड को हम थर्ड कर दें, थर्ड को सेकंड कर दें, बिगड़ जाएगा। इन एवरी स्टफ वेरी वेरी केयरफुल, एक बार नहीं होता है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मैंने आई राइट, मैंने लिख दिया अच्छे से, फिर अगले दिन फिर मैं उसको कहता हूँ इसमें दिक्कत है, फिर अच्छी, और 20 दिन अगर यही मैं काम करता हूँ तो आई थिंक आई चेंज माई ओन राइटिंग 20 times. I expect all of you to be editor and critical editor of your own writing. अगर आपको अपनी राइटिंग में कमी नहीं दिखती है तो आप रिसर्च नहीं सीखें। First you become critical towards yourself. I do myself, and because of that it improves a lot. मैं खुद हंसता हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ, तुम्हारा जो ड्राफ्ट मैं चेक करता हूँ, तुम अपना फर्स्ट ड्राफ्ट भी रखो। माय स्टूडेंट टेल मी कि सर मुझे हंसी आती है मेरा अपना फर्स्ट ड्राफ्ट, मुझे लगा था कि मैंने बहुत अच्छा लिखा, और जब आपने करेक्ट कहा तो उससे अच्छा नहीं लगा, अब मुझे लग रहा है कि क्या मैंने बेवकूफ़ी वाली बात लिखी। एक हमारे सीनियर टीचर ने कहा था, बहुत बार हमारा माइंड सेचुरेट हो जाएगा तो अपनी गलती हम नहीं भूल पाते हैं, तो जो लिखा है उसको तुम 15 दिन तक नहीं पढ़ते, यू रीड इट आफ्टर 15 days and you will find problem. खुद को लगता है कि ये कैसे गलती कर दी मैंने, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। So we should become critical towards our own writing. The purpose is to improve ourselves. किसी का भी पर्पस है, दूसरे के आर्टिकल को भी क्रिटिकली रिव्यू कर रहे हैं, we should duly acknowledge their contribution. आप एनुअल रिव्यू का आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो जो साइट करेंगे पहले किसी का बड़े काम का, बताएंगे उसने क्या किया, क्या किया नहीं मतलब, what has been the seminal contribution of that research. सबसे पहले वो ये एक्नॉलेज करते हैं कि उनके पहले नॉलेज कहाँ तक रुका हुआ था, और उसके बाद नॉलेज कैसे उन्होंने बढ़ाया। So due acknowledgement of contribution. फिर what he could not do. So balance approach. इसी को कहते हैं ये ना, critique does not mean only criticism. It is a critique, not criticism. So critique means evaluation of contribution, positive contribution and limitation. और सारे आर्टिकल का, जितने आर्टिकल हुए हैं चाहे कितना बड़ा भी हो, सबका क्रिटिक पॉसिबल है। अगर हमें नहीं उसकी कमी दिख रही है तो ये हमारी दिक्कत है। अभी we have not developed research skill which we are required to develop so far, होता है। और जैसे मैंने कहा every day we have to learn, every day we have to learn। तो मैं तो
पढ़ता हूँ, वो किसी आर्टिकल को जब साइट करते हैं, मैंने भी तो पढ़ा था ये आर्टिकल, व्हाई आई कुड नॉट फाइंड दैट लिमिटेशन, नाउ दिस पर्सन हैज फाउंड लिमिटेशन, so it is also a learning for me. So when I read that article, I found everything is right, but now after reading this article annual review, I am convinced that no, this is the limitation in that book, why I could not see. So by reading some good persons, good scholars, comment, critique, annual review में वो आपको मिलेगा, ठीक है? अब एक जैसे कि मैंने आपको कहा कि philosophy has two meanings. One, it is a discipline, and second, it is highest form of knowledge in any field. So every field has its philosophy, and ideally, when PhD should be awarded, when you have taken knowledge in your field to the level of philosophy in second field. Do you agree with this? ठीक है? ये है। और जितने अच्छे जर्नल के आर्टिकल होते हैं वो वहाँ तक पहुँचाता है, इसीलिए वो APA का APA है और हमारा गुड़गांव जर्नल गुड़गांव को आप बुरा नहीं मानिए, लेकिन वो एग्जाम्पल देने के लिए। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि एवरीथिंग इज नॉट गुड अबाउट वेस्ट, तो मैं इमिटेट कर देगा, बट इन हायर एजुकेशन जो ऑनेस्टी उनके पास है और जो रिगर है, दैट इज वर्थ लर्निंग एंड इमिटेटिंग। यू विल गेट इंस्पायर्ड, ओल्ड पीपल 70 ईयर 75 ईयर, इतनी एनर्जी, इतना पैशन, कुछ केवल लगे हुए अपने काम से। So another thing, you should look for such an inspired person anywhere. कम है हमारे कंट्री में, कम है, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि नन बड़ा नहीं है। So you should try to know good scholar in your field, real good scholars. अगर एनुअल रिव्यू में नहीं भी छपा है तो likely to be published. जैसे हमारे यहाँ के फिजिसिस्ट थे S.N. Bose, he worked with Einstein. Bose Einstein एक formula दी थी। S.N. Bose could not get Nobel Prize, but he was on the verge of getting Nobel Prize. उस लेवल का भी जो on the verge of publishing an annual review, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए अपने फील्ड में कहीं से, और एक पॉइंट बनाइए कि मुझे मिलना है इस पर्सन से, और try to know about that person. I was lucky to get supervisor who works harder than me. इस एज में भी, he is 70 plus, but in terms of energy and passion he is quite active. थकते नहीं, आप बिना इस तरह की पर्सनालिटी के रिसर्च अच्छा नहीं कर सकते। So in order to be inspired, you need to know a person and interact with a person who is already inspired. एक वैसा रोल मॉडल चाहिए जिसके लाइफ में पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं। आपने कहानी सुना होगा, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हो, जो भी हो, आप मिलिए एक बार उससे, मिलके ही आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा क्या करना चाहिए, कैसे इतना अच्छा रिसर्च करते हैं। So it's not a magic, I am saying. In American university, and I use this phrase, it is my own phrase, there is an academic ecosystem which unfortunately does not exist in our country. एक मैं देखता हूँ जो एवरेज या स्लाइटली अबव एवरेज भी स्कॉलर, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाता है, जब 5 साल बाद PhD करके यू कैन सी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कोई जादू होता है। मैंने जब बात करता कि सर 12 बजे रात को भी मैं जब सोने जाता हूँ तो मुझे लगता है आज तो काम पूरा किया है। Even working very hard, you always live with a sense of guilt. वो सेंस ऑफ गिल्ट जो है, दैट मोटिवेट्स यू वर्क। तब आप उसको देखें 5 साल के बाद जो तो वो केवल डिग्री नहीं है उसके पास, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, आर्टिकुलेशन, यू कैन सेंस ये
रियल पीएचडी की हो गई, यहाँ पे कर लगी, यहाँ पीएचडी और एमए में कोई डिफरेंस नहीं है। कभी कभी तो पीएचडी इज वर्स देन एमए और पीएचडी। तो पर्पस है कि यू शुड लुक फॉर सम सच पर्सन। तो आप किसी भी कोशिश कीजिए, कोई अमेरिका से या यूके से करके आया है, कोशिश कीजिए, आजकल बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ से, कि बात करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं अभी भी सीखता हूँ, कोई भी स्टूडेंट आता है, तो मैं भी सुपरवाइज करता हूँ, तुम जो पहले दिन गए तुम्हारे सुपरवाइजर ने क्या कहा? By asking that, I am learning for myself that how should I act as a supervisor. So every day I try to learn the art of supervision. और कोई तरीका हो सकता है सुपरवाइज करने का, ठीक है? और उसका ये रिजल्ट भी मिलता है। मैं एपीए की बात कर रहा था, जैसे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन एबल टू पब्लिश अ पेपर इन एपीए। 100 साल में 50 लोगों ने भी नहीं किया है, वो टफ है, ऐसा नहीं कि कोई गारंटी है, लेकिन एवरी डे आई हैव टू लर्न। स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ तो सीखता हूँ, कॉन्फ्रेंस में गया वहाँ सीखता हूँ, जो अमेरिका में कर रहे हैं उनसे मैं सीखता हूँ तुम क्या कर रहे हो। एवरी डे आई हैव टू लर्न। तो जब तक ये हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं होगी कि आई डू नॉट नो एज मच एज आई शुड नो, और अपनी कमी को ये करना, ठीक है? तो इस लेवल पे अब जैसे मैंने कहा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये तो ऐसी चीज है कि इस पर मैं अभी भी बोलूंगा, और सेकेंडरी सेशन मेरा है, और वो कैसे फिलोसफी के लेवल पे आ सकता है, ठीक है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे हम देखें, क्रिटिकल कैसे हम हो सकते हैं। अब ये बोलना इजी है, it becomes a critical review, you do literature review critically. But what is meaning of critical review of literature? How to do that? How to develop that skill in a research scholar so that he or she can do critical review of literature? That is a very very important thing. और वहाँ पे मैं बताऊँगा कि philosophy के level पे, और प्रोफेसर मिश्रा ने जो टॉपिक की ना पैराडाइम वगैरह की बात, तो थॉमस कुन की चर्चा की होगी, थॉमस कुन एंड हिज वर्क स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, मीनिंग ऑफ पैराडाइम। अब देखिए कि ये थॉमस कुन जो एक फिजिसिस्ट थे, और ये जो बुक है ये हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस है, एक फिजिसिस्ट है, और उसकी वजह से, इस बुक की वजह से इसकी चर्चा इतनी करते हैं, बहुत कम। आप वो तो प्रोफेसर मिश्रा ने आपका लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया। मैं जब पूछता हूँ तो कम से कम 80% यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर को ये बताया ही नहीं जाता है बुक के बारे में, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इम्पॉसिबल ही नहीं है कि इस बुक के बिना कोई पहला क्लास शुरू हो। आप अगर पढ़ें ये बुक, मतलब ये बुक जब आई तो इसने साइंस के बारे में, रिसर्च के बारे में हम लोग का नजरिया बदल दिया, इसलिए इसको सेमिनल वर्क करते हैं। इसके बिना आप रिसर्च के बारे में सोच ही नहीं सकते कुछ। पैराडाइम का क्या मतलब है, तो हम लोग सब पैराडाइम में हैं, किसी न किसी पैराडाइम में, लेकिन हमें पता नहीं। ये उसी तरह की चीज है जैसे फिश lives in water, but fish does not know that she lives in water. For her it is a reality. जैसे जो एटमॉस्फेयर एयर है, एयर प्रेशर तो सब हमारे ऊपर है, but do we experience it? No. We take it for granted, normal. उसी तरह से we all operate in some kind of paradigm, but without doing it. One of the objective of research training is to make aware researcher about meaning of paradigm, different kinds of paradigm, and how paradigms influence every stage of your research, including review of literature. अगर philosophy के level की बात मैं कर रहा हूँ, तो review of literature जो है
वो अपने आप फिलॉसफी पैराडाइम से इन्फ्लुएंस होता है। एक पैराडाइम के लोग एक तरह से रिव्यू करेंगे, दूसरे पैराडाइम के लोग दूसरे तरह से रिव्यू करेंगे, और पैराडाइम के बीच में भी बड़े ऑथर हैं, प्रोफेसर मिश्रा ने उसका नाम, क्योंकि उन्होंने नहीं मुझे बताया था, मैंने पढ़ी वो, गुबा नाम है, EGGUBA, गुबा, पैराडाइम डायलॉग। और जो लोग क्वालिटेटिव मेथड में काम करना चाहते हैं, ही इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर, गुबा एंड जिंकल। उनकी सेज से जो है 4 वॉल्यूम में क्वालिटेटिव रिसर्च पे आया है। फिर एक गुबा की पहली बुक है कंपीटिंग पैराडाइम्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो अभी कुछ देर, अब आप 5-10 मिनट कुछ पूछिए, उसके बाद तो ये सेशन एंड होगा, सेकंड सेशन में हम लोग बात करेंगे। सो नाउ इट इज योर टाइम। जी या critical. Yeah, I think in post-lunch session, because it requires very elaborate discussion, and it's not easy. It's not easy. So it is very good question, and you remind me when we reassemble post-lunch, and I will, yeah. Sir, what is the difference between review of literature and literature? Actually, this was question in our post-work exam. So review of literature and literature review. No, I don't think there is any difference. It's same thing, different way of writing. There is no substantive. Yeah. Sir, for example, if you talk about thesis and we are writing the second chapter, so in that when we are writing the review, there we have to criticize, or when we are writing the introduction and we are writing the discussion. At every stage, even in first chapter when you are. Yeah, in first chapter and last chapter is generally in discussion part, but we are writing the second chapter, so there we have to write their saying as it is, what they have done. वही देखिए वही दिक्कत है। एक आजकल और फायदा है कि मैं अपने स्टूडेंट को तो क्लियरली कहता हूँ कि जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में थीसिस जमा हुआ है उसको नहीं पढ़िए। And if I can say about JNU thesis, you can imagine. So आजकल it is possible to download thesis which have been awarded in a good university, Oxford, Yale, Harvard. एक प्रैक्टिकल सजेशन में सब अपने रिसर्च कर देता हूँ कि हार्वर्ड, येल, कैम्ब्रिज में जो भी तुम्हारे फील्ड में अवार्ड हुआ है उसको डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट लेके स्पाइरल बाइंडिंग करो, अपने टेबल पे रखो, रोज देखो एक अच्छा थीसिस कैसे लिखा जाता है। उसमें आप देखेंगे कि रिव्यू कैसे लिखा जाता है, तो आपको समझ में आ गया जो हिंदुस्तान में चल रहा है वो कोई मतलब ही नहीं है। My question is it not necessary that professor must be updated over time? क्योंकि जब भी हम AP की बात कर रहे हैं, 5th edition, 4th edition, over the period of time जब एक रिसर्च स्कॉलर फाइनल स्टेज पे आता है कि अपनी चीज़ों को सबमिट करने के लिए, तो वो बाहर चला जाता है किसी ट्रेंडिंग सेवा लेकर, तो वहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दी जाती है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि उसको इसी दौरान अपडेट किया जाए टाइम टू टाइम। Yes, we know that जैसे APA की इन्होंने बात कही, एक तो उसका रेफरेंसिंग का होता है ना, APA मैनुअल 7th edition is the latest one. Suppose when you got admission in PhD program and APA manual of publication जो है 7th edition was there, but when you are about to submit 8th edition has come. I'm just hypothesizing. Then our reference should be as per 8th edition and not as per the 7th when you took. So a researcher should be always alert. What is new? No, what is the latest? And what is expected from us? Sir, Yes. sir, is there any difference between research paper and research article? No, it's same thing. Same thing, research article. Article based on your research, basically. You have done a research. First we do research, and based on that research we write an article, or we call paper also. Research article or research paper. Yeah, there can be difference between research article and chapter.
Sometimes we write also book chapter based on our research. So articles are always published in journal. Yeah. Yeah. Sir, as you know, you have lot of experience. तो सर just a curiosity, ये पूछना चाहते हैं कि सर आप जेएनयू में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? Psychology. साइकोलॉजी। अभी नेक्स्ट सेशन भी सभी कंटिन्यू करेंगे, तो क्या लंच के लिए ब्रेक कर दें? और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप तो आपस में बात करते ही रहते हैं, तो यू शुड बिकम क्रिटिकल ऑल्सो ऑफ मी. मैंने क्रिटिकल की बात कही ना, तो यू शुड बी क्रिटिकल ऑफ मी ऑल्सो, एंड यू शुड थिंक ऑफ सम क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन के साथ ही नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होना चाहिए. सो आई वुड एक्सपेक्ट यू शुड कम विथ सम क्वेश्चन, एंड आई विल स्टार्ट नेक्स्ट सेशन by responding to your question, and then I will say whatever I have planned to say. सर जैसे आपने कहा कि आप हमेशा सीखते रहते हैं हर जगह से, माशाल्लाह नहीं, मुझको कोई असर नहीं महसूस करेगा. नहीं, मुझे कोई नहीं. मैं तो अपने क्लास में बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि अगर जो बात मैंने कही उससे तुम अगर डिफर नहीं कर रहे हो, उसको क्रिटिक नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट